you have the weekend, so you should try to do some questions on past paper, like मेरे ख्याल में forces तक आप कर सकते हो, और questions भी including work energy power also. A concrete cube of side 0.60 meter and uniform density of this much is lifted 5 meter vertically by a crane. What is the change in potential energy of the cube? हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे? अब इसमें देखो बड़ी सिंपल है कि we have the distance, we have the density, we have the क्यूब की एक साइड है हमारे पास जो, MGH. हाँ, दिस इज आई वाज आल्सो थिंकिंग कि एमजीएच लगाता हूँ, लेकिन मेरे पास मास नहीं है, मेरे पास डेंसिटी है. आई वाज थिंकिंग आई कैन फाइंड द वॉल्यूम, इट्स अ क्यूब, सो अगर मैं आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेता हूँ. वॉल्यूम है और डेंसिटी, उस पर रख के मास निकल आएगा. ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम रख के मास निकल आएगा, और उसको रखकर आई कैन फाइंड द, आई हैव द हाइट, सो मास, फिर वो एमजीएस लग जाएगा. तो दिस इज द प्लान. अब आप शुरू करो. So volume is mass over density. Hmm. Or yeah, density is mass over volume. Right. Okay. So volume equals mass over density. Volume will be मास क्या है हमारा? उन्होंने तो हमें मास नहीं दिया, उन्होंने हमें बस एक साइड दी हुई है. नहीं तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? एल क्यूब होता है ना. जी. तो उसको लगा देते हैं. तो जस्ट L क्यूब. वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब. ओके. सो 0.60 cubed. Zero point two one six. 0.216. That's the volume. 216. So उसके बाद mass equals density multiplied by volume. That's 0.216 multiplied by 2.0 times 10 to the power 3. $432. तो उससे हमारा मास आ जाएगा. And then we can input 432 into gravitational potential energy equals mgh. So 432 multiplied by 9.81 multiplied by height क्या है? Lifted 5 meters. Okay, 5. आई थिंक यू आर डूइंग राइट. आंसर मैच कराते हैं. आंसर आप निकालो. I think मेरा आंसर गलत आया है. मेरे पास जो आ रहा है वो 21 किलो जूल आ रहा है. अच्छा नहीं, मुझे भी यही मिल रहा है. 21189.6.
तो 21 किलो जूल्स हुआ। ये मिल रहा जी, मुझे आंसर जूल्स में मिला है। So if you convert it, you get 21 kilojoules. है। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। The force resisting the motion of a car is taken as being proportional to the square of the car speed. The magnitude of the force at a speed of 20 meter per second is 800 Newton. What effective power is required from the car engine to maintain a steady speed of 40? Acha, he says a steady speed. It means that speed is constant. Speed constant means forward force should be equal to backward force. जी, so हम इसके अंदर वर्क डन ओवर टाइम यूज करेंगे ना? We'll use work done over time. हाँ, मेरा भी ये Power ख्याल power है। equals work done over time. बिल्कुल। अब देखो इसमें लिखा हुआ है proportional to the square, इसको यूज करो ना। देखो, the force resisting to the motion of a car is taken as being proportional to the square of the car speed. So let's say हम इसको x कर दें, तो x is proportional to v square. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो x is equal to kv square. kv square. ये पहला स्टेप हो गया। The magnitude of the force magnitude of the force at a speed of 20 meters per second is 800 newtons. So x is equal to 800. So ठीक x है, is equal to 800. हम ऐसे करेंगे. बिल्कुल। And now kv square should equal x square. I mean, it should equal x. Yeah, शाबाश, what should do? The magnitude of the force at a speed of 20 is to इसको रख के ना 20 रखते हैं और इससे k निकल आएगा, इक्वेशन बन जाएगी। 20. कैसे? हाउ? Okay, so v square will become 20. Okay. 800 is equal to k into 20 square 400। 20 कैसे आ रहा है? Don't you think it should be 2? The magnitude of the force at a speed of 20 meters per second is 800 newtons. तो उस पे रखे ना, तो मेरे हिसाब से तो k की वैल्यू 4 आ रही है। मुझे 2 मिल रहा है सर. हम्म, My answer is 2. अच्छा, ठीक है, सही है। ओके ओके, आई Because गॉट। 20 squared हाँ 400. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। k2 आ गया, इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या करूं? Replace put v पावर square का as 440. पावर का फॉर्मूला है f अपॉन v। We can put v square as 40 in the first formula, right? नहीं नहीं नहीं, सर अब तो हमें तो Which will पावर। give us the new force जो हम आई नो। यूज करेंगे पावर के फॉर्मूला के अंदर. हाँ ठीक है, चलो ये भी सही बना। डायरेक्ट आप इधर आ जाओ। हमें तो बेसिकली p इज इक्वल टू f अपॉन v निकालनी है ना। जी. तो अब आप ठीक है वो कर लो, बट आई गॉट यू पॉइंट।
तो आप उसको करके फिर सॉल्व करो। 40 square 40 square multiplied by 2 3200. So that's the force, and we'll divide this force by the velocity, which is 40, right? So when I divide 3200 by 40, I don't get any answer that's shown over there. बट आई एम गेटिंग 128। जो आप वाला मेथड है उससे आई एम गेटिंग 128। Wait. अच्छा सर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं, वो एक ही तरीका। आप हमने पहले के निकाल लिया ना। यू टोल्ड मी दैट आप उसके बाद मल्टीप्लाई तो होगा ना वो पिछली वाली नहीं नहीं, फोर्स। अच्छा हाँ, लेकिन जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर एफ ओवर वी था, नॉट एफ मल्टीप्लाइड बाय वी. यस, माय मिस्टेक, सॉरी। अभी मुझे पता। यू कुड आल्सो टोल्ड मी दैट आई हैव रिटन द फॉर्मूला रॉन्ग। E is equal to FV है। 128,000. So C. ठीक है। Initially, four identical uniform blocks, each of mass m and thickness h, are spread on this. अब ये करते हैं this question. How much work is done on the blocks in stacking them on top of one another? Work done is force times distance. And work done equals to energy. ठीक So है। 3 mgh. A. How? For one it's mgh. मेरे पास And 6 mgh। आपने मल्टीप्लाई क्यों किया बाय 2? नहीं, देखो ना, अब ये देर आर फोर ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक रखूंगा तो उसकी हाइट होगी h। सेकंड ब्लॉक रख दूंगा तो हाइट हो जाएगी 2h। तीसरे ब्लॉक पे 3h हो जाएगी, 3 mgh हो जाएगी। तो जब ये चार ब्लॉक रखे होंगे तो टोटल जो है वो आपकी पोटेंशियल होगी 6 mgh। जैसे बुक्स नहीं रखते ऊपर नीचे। अच्छा हमें सारों को, अच्छा सारों को कुल मिला के ऐड करना है. ओके ओके बी.
Okay, did you get it? जी सर. Now we have this question. The question says the data below are taken from a test of a petrol engine for a motor car. Power output, fuel consumption, energy content. Which expression will evaluate the efficiency of the engine? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर आउटपुट over total power input times 100. So we need to calculate the total power input first, right? ऐसे ही होगा ना sir? Then from that we can see which of these is actually giving us the total power input for the formula. जी? बिल्कुल ऐसे ही है. So हम ये यूज कर सकते हैं एनर्जी इक्वल पावर मल्टीप्लाइड बाय नहीं हम ये नहीं यूज कर सकते एनर्जी इक्वल्स पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी एक फॉर्मूला है ना बट इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है रिचर्ड 60 क्या है ये जो बार बार 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 60 की ये व्हाट्स द 60 जो हाँ, मुझे लग रहा है ही इज कन्वर्टिंग आवर्स. ये डबल 60 जो है ना, ये ऐसा लग रहा है ही इज कन्वर्टिंग आवर्स इनटू सेकंड. अच्छा तो दैट अरे तो फिर मेक्स सही था ना कि मैं एनर्जी इक्वल्स पावर इक्वल्स एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम मैं एनर्जी इक्वल्स पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पावर इज करूं इक्वल टू एनर्जी. वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो ये है ना, हाँ एफिशिएंसी इज so इक्वल टू. so with this energy equals power multiplied by time I'll calculate the total input power which I can then input into the formula और फिर मैं देख सकूं कि कौन सी करेक्ट है हम्म तो हमने आवर्स को सेकंड्स के अंदर करना है इधर सेकंड में तो करना पड़ेगा. तो
It can't be A because 60 and 60 do not multiply with 20. Because to get the time, it needs to divide. Hmm? It can't be A because 60 and 60 do not multiply with 20, they divide by 20. Ah, right. So, say 10 to the power 6 क्या है? That's the conversion, right? For the MJ. Megajoule. G. To use the conversion and to put it into joules. Hmm. Okay, so then it's B. The diagram shows the design of a water wheel which drives a generator to produce electrical energy. The flow rate of the water is 200 kg per second. The generator supplies a current of 32 ampere at a voltage of 230 volt. Ignoring any changes in kinetic energy of the water, what is the efficiency of the system? अच्छा हम इसके अंदर दोबारा पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे but this will be power equals V multiplied by I. ऐसे ही होगा ना सर? Hmm? Power equals V multiplied by I. I was thinking that he has given us height. So as the wheel is rotating, water is traveling a height. So I was thinking that we can find the potential energy. We can find the लेकिन potential. हमारे पास कोई भी टाइम की वैल्यू नहीं है इसके अंदर. नहीं तो potential energy तो mgh है ना. We have the flow rate. It's No, 200 kg per no, but energy से तो अगर हमने पावर में कन्वर्ट करना है because energy equals power रेशियो multiplied by time. एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी तो पावर और एनर्जी किसी की भी रेशियो से बन सकती है ना. देखो जो इनपुट पावर है दैट कैन बी करंट इनटू वोल्टेज, वो तो डायरेक्ट निकल आएगी. आउटपुट का इशू है. अच्छा. So we'll have to use MGH. हम्म. लेकिन हमारे पास मास नहीं है. We don't have the mass to use MGH. We just have current, voltage, the height, and the नहीं flow rate. आप पावर इनपुट तो निकालो. 7360. 7360. हम्म. That's the total power input. ठीक है, मैंने इसमें निकाली है. माई पावर, द पावर विच इज कमिंग, द फ्लो रेट, द जनरेटर इज गेटिंग टू 7360. जी भी वही वैल्यू मिली है सर. तो
आपने भी एनर्जी इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय T यूज किया है सर। आपने भी एनर्जी इक्वल्स पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम यूज किया है सर। और mg mot gh। ओह ओह ओके सर ओके Did you get it? या what is the internal energy of the object? It is the energy associated with the object's movement through space. It is the energy associated with the random movement of the molecules in the object. It is the energy due to the attractions between the molecules in the object. It is the sum of all microscopic potential and kinetic energies of the molecule in the object. Okay, so it cannot be A. A गलत है. It can't be C. C भी गलत है. It's between B and D. It is between B and D. A और How C जो है, इसका energy? it can't be A or C, sir. It is the energy associated with वैसे movement तो through space. हम ये क्वेश्चन ट्राई तो कर रहे हैं, बट नॉर्मली दिस टॉपिक इज नाउ मेनली शिफ्टेड टू एएस। इंटरनल एनर्जी इसको छोड़ दो, बिकॉज इसके जो ऑप्शंस है ना वो A2 में जा रहे हैं। ये करते हैं, अ कार इंजन exerts an average force of 500 न्यूटन इन मूविंग द कार 1 किलोमीटर। In 200 seconds, what is the average power developed by the engine? So, A car engine exerts a force of 5 न्यूटन। sir, it's B, 2.5 kilowatts. Sir? How 2.5? How you got 2.5? Okay, so the first thing I did was I calculated the work done, which is 500 multiplied by 1000. I converted the
1 kilometers into 1,000 meters. So after I did that, I divided the value I got from there by 200, and then the answer I got from that was 2,500. So that's 2,500 watts. I checked all the values and answers. The closest one was 2.5 watts. I divided my answer by 1,000 and I got 2.5 kilowatts, which was the accurate answer. Hmm. That makes sense. Okay. A mass of gas enclosed in a cylinder by a piston is heated gently. At the same time, the piston is moved so that the pressure remains constant. As the result of this, what will not occur? Seven, answer of seven, I'm getting B. हाँ जी सर मुझे भी B मिला. Force is 500. Distance. Multiplied by 1,000. Hmm? 500 multiplied by 1,000. Divide that value by 200 and then convert it into kilowatts. So you are using F into D upon T. F into D divided by T. Yes. Hmm. Okay, now a mass of gas enclosed in a cylinder by a piston is heated gently. At the same time, the piston is moved so that the pressure remains constant. It's a constant pressure situation. The pressure remains constant, but the heat has been increased, which means the kinetic energy of the particles has increased. So the number of collisions per second on the molecules on the piston will increase. So it cannot be D, because D will actually happen. The separation of the molecules, average velocity of the molecule will increase. That will happen. A will happen. So it cannot be A. The molecules will travel greater distances between collisions. It's between B and C. It can't be B, I think. So I think the answer is B. Because the molecules will travel greater distance before collision because separation बढ़ गई. The number of collision per second of the molecule on the piston will increase. When you That will heat, happen because there's more kinetic energy in the particles. the concept coming from chemistry. So when you are heating the gas, what will happen? That if Kinetic energy of the when you're molecules will heating the increase. gas, the molecular energy will increase. Not occur, will not occur. That's a tricky So part, it's ना? so the answer is B. ये तो पहला वाला The तो separation will not increase why? because the pressure लेकिन is हमने constant and the लेकिन हमने kinetic energy is the only thing that's increased. लेकिन हमने पिस्टन भी तो मूव कर रहे हैं. हाँ, but the piston move जब किया है, पिस्टन but the pressure सेपरेशन बढ़ जाएगी. wait अगर हाँ because to keep pressure constant the piston ऊपर को हो जाएगा. यस. Oh okay. So it's C. अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अब प्रेशर को वो नहीं बदल रहा. अगर वो प्रेशर को नहीं बदल रहा तो फिर ऑब्वियसली अच्छा द मॉलिक्यूल विल ट्रेवल बिकॉज सेपरेशन इज इंक्रीजिंग सो दिस विल आल्सो अकर. Now in the last part, this is the tricky part. It's not talking about collision. He's talking about collision per second. Look, he's talking about collision per second. It doesn't occur. Okay. Because actually number of collision per second of the molecule will not increase because you're not changing the pressure.
as you are not changing the pressure, the average force is the same. So the pressure is the same. So the collision per second is the same. The kinetic energy of a particle is increased by a factor of 4. By what factor does its speed increase? The kinetic energy of particle increase by a 16, factor of 4. 16, 16, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जी, होगा तो 16. A is equal to half mv square. So if we say that you are increasing by a factor of 4, so it will be half m 16 v square. So it's 16 into half mv square. अब इसको उसने काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 16 टाइम्स. अच्छा, velocity is not increased by 4. Look, actually mistake is there. Velocity is, they are not increasing the velocity by a factor of 4. They're increasing the kinetic energy by 4. तो हमने उसको 4 स्क्वायर कर देना है ना. वेलोसिटी नहीं, देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है. Kinetic energy is increased by a factor of 4. The new velocity, let me call this is v1. बेसिकली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, वो जो वेलोसिटी वो तो पूछ रहा है. Equation 2 divided by equation 1, 4 ek upon ek, ऐसे सॉल्व करो. हाफ m v2 स्क्वायर अपॉन हाफ, सॉल्व करो. I'm getting this. So my answer is coming 1. Look at the working.
जी sir, I got it. Now start number 10. A piston in a gas supply pump has an area of 600 centimeters square. It moves a distance of 40 centimeters during one stroke. The pump moves the gas against a fixed pressure of 50,000 pascals. How much work is done by the piston during one stroke? Try this one. We have the pressure and we have the area. We can calculate the force. We have the distance moved. Okay, so this is acha, ye to- so pressure equals force over area. Force is pressure multiplied by area. A piston in a gas supply and area is 600. 1.2 times 10 to the power 8 joules. You're talking about D. Yeah. Logic. Okay. The logic is pressure equals force देखिए over पहले ये area. देखें Force कि equals पहले मैं भी वर्कआउट pressure कर लेता हूँ. multiplied by. जी sir. Let me check जी sir. also that is it a relevant question right now or not? Because सर ये उस टॉपिक का है आई थिंक. the work done by a gas, the डेंसिटी topic. एंड प्रेशर का क्वेश्चन है सर. देखो इसका फॉर्मूला ये है, वैसे कर तो सकते हैं बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज द तो फॉर्मूला and it is pressure into area into length. This is the working. Area is 600. 600 multiplied by 50,000 100 and then that multiplied by 40. 100 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना. क्यों? सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लाऊंगा ना. ओके वी यूज ओके ओके. एंड 40 सेंटीमीटर तो 40 अपॉन 100 करना पड़ेगा. नाउ दिस इज द थिंग. आपने 40 को क्यों डिवाइड बाय 100 किया टू मेक इट इनटू मीटर्स? Because the question has to be in meter ना. वन 1200. So 1.2 times 10 to the power 2. Now try this question. I'm just coming in a minute. Try question number 11 and 12. I'm just coming.
multiplied by area, 0.05, multiplied by distance, 3, 600. 11. Sir, 11 के लिए मुझे 600 आ रहा है. 600 is not an A, or 600 is not any of the options. So same logic should be applied ना. हाँ Same logic जो पीछे लगाई थी. हाँ, मैंने सेम लॉजिक ही किया है. 500 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर 0.05, 30 डिवाइड बाय 100 0.3, 0.05 multiplied by 0.3 multiplied by 40,000. I'm getting 600. चलो फिर इसको लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम. मेरे पास जो आंसर आ रहा है 11 का, आप अगर 11 को, मेरे पास 11 का आंसर आ रहा है ए. आई थिंक आप वर्किंग सही करो, कन्वर्जन में कोई मसला हो रहा है. और 12 में मुझे C मिल रहा है. 1 times 10 to the power 9. ये वाला. So let's do it tomorrow. You have more time, so you should try to do some questions tomorrow also. By tomorrow, weekend is there. So कोशिश करो कि वर्क एनर्जी तक आप भी क्वेश्चंस कर लो और
and maximum number of questions, so we can inshallah do more questions tomorrow. Okay. Okay. So we are stopping here. Inshallah, continue in our next class. Allah Hafiz.